So let us discuss some problems based on implicit function. So write down one question. Find dy by dx if y plus sin y is equal to cos x. ये जो मैं फंक्शन लिखा एक बार ठीक से देख लेना. You have to find the value of dy by dx if y plus sin y is equal to cos x. Once you go through the function को ठीक से देख लो whether it is implicit or explicit function. मैं ऑलरेडी पहले ही बोल दिया कि आई एम डिस्कसिंग सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन implicit function. ये implicit function है. Why? Because this function contains both the variables x as well as y. So that's why we can say that this is an implicit function. अगर एक ही function में variable x and y दोनों ही रहेगा तो that function is called an implicit function. So let us find the value of dy by dx from this function. So how can we find the value of dy by dx? Let's see. So here the function is y plus sin y, which is equal to cos x. Since you have to find the value of dy by dx, what's the meaning of dy by dx? That means you have to differentiate the function with respect to x. So let us differentiate both sides with respect to x. So when we differentiate both sides with respect to x, that is differentiating both sides with respect to x, we can write it as ddx of y plus sin y, which is equal to ddx of cos x. ठीक से देख लेना. On the left hand side, the first term is here y, but you have to differentiate the function with respect to x. ठीक से देख लेना. You have to differentiate the first term with respect to x, but here the first term is y, but you have to differentiate with respect to x. So simply we can write dy by dx, because we cannot differentiate directly this variable y. अगर यहाँ पे x होता तो then we can write ddx of x, which is 1, but since here the variable is y and you have to differentiate with respect to x, we cannot differentiate directly, so that's why we have to write dy by dx. So the differentiation of the first term is dy by dx plus, let us differentiate the second term of the left hand side part. What's the second term of the left hand side part? That sin y. ठीक से देख लो यहाँ पे जो एंगल है, दिस इज वन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, राइट, वन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, लेकिन यहाँ पे जो साइन का जो एंगल है वो एंगल है y, बट यू हैव टू डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो सिंस डिफरेंट वेरिएबल्स आर देयर, सो मैं पहले भी एक एग्जांपल दे दिया था, जो टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है उसको पहले x पकड़ लो. दैट इज लेट अस कंसिडर दिस y बी x, क्योंकि यही वेरिएबल के लिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है. अदरवाइज वी कैन डिफरेंशिएट दिस टर्म डायरेक्टली. तो जो वेरिएबल के लिए डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, जो टर्म के लिए डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता है, वही टर्म को x कंसिडर करना है. सो लेट अस कंसिडर दिस y बी x. सो नाउ इफ यू डिफरेंशिएट this term with respect to x, ddx of sin x we know cos x, that is cos y, क्योंकि यहाँ पे तो एक्चुअल वेरिएबल x नहीं है, एक्चुअल वेरिएबल y है. जस्ट फॉर द डिफरेंशिएशन ओनली यू हैव टू assume this variable as x. So differentiation of sin y with respect to x is cos y into जो टर्म को x कंसिडर किया था, यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट टर्म अगेन. सो जो टर्म को x कंसिडर किया था मीन्स यहाँ पे y को x कंसिडर किया, दैट मीन्स इनटू dy by dx, which is equal to, now you see the right hand side part. See the difference between the second term of the left hand side and the right hand side part. And right hand side the angle is x and you have to differentiate it with respect to x only.
So then there is no problem, direct we can differentiate it. That is ddx of cos x, and ddx of cos x is minus sin x. एक बार ठीक से डिफरेंशिएशन का डिफरेंस देख लो, लेफ्ट हैंड साइड का सेकेंड टर्म और राइट हैंड साइड का जो टर्म है कैसे डिफरेंशिएट किया एक बार देख लेना. लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल जो टर्म था साइन, उसका एंगल है y, बट यू हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए तो y को x कंसिडर करके डिफरेंशिएशन करना पड़ा. लेकिन राइट हैंड साइड में जो टर्म है उसका एंगल प्रॉब्लम नहीं है, x ही है. सो x के साथ x का डिफरेंशिएशन आराम से हो जाता है. दैट्स व्हाई आई कैन राइट ddx ऑफ cos x इज माइनस sin x. सो सिंस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, अभी देखो जितना dy बाई dx का टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, सब dy बाई dx को अरेंज करके लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ. लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में कोई dy बाई dx का टर्म नहीं है, तो और आसान हो गया काम. दैट मीन्स टेक dy बाई dx कॉमन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. So if I take dy by dx common, then we can write 1 plus cos y, which is equal to minus sin x. That is dy by dx is equal to minus sin x by 1 plus cos y. Minus sin x by 1 plus cos y. Provided y is not equal to twice n plus 1 into pi, जो प्रिंसिपल that is the general solution होता है trigonometry का. So this is the value of dy by dx of the given function. So in this way we can solve implicit function. So this one is the first example. Let us take one more example. That is example number 2. एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा और एक आसान सा एग्जाम्पल. इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx. देखो यहाँ पे जो फंक्शन है, यहाँ पे भी देखो x भी है y भी है. दैट मीन्स हियर ऑल्सो वी कैन से दैट दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन. सो इफ दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन, देन यू हैव टू डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. So let us again differentiate both sides with respect to x. That is ddx of x minus y, which is equal to